ये जो पोएट होते हैं इनसे लड़कियां पट जाती हैं जल्दी। कहाँ सुना है बताओ, मैं देख कर आता हूँ। मुझे लगा ताकि सर्टिफिकेट खराब ना हो जाए मैं उसे फोल्ड करके रख लूं। या उनका पहला सवाल ये होता है कि अच्छा मेरे अलावा कितने लोगों को और बोला। And I'm like, I'm 32. And she's like, I was asking the floor. Hi guys, welcome to Qisse with Kopal Season 2. Crazy. Wow, this clap lasted a while. Yeah, Season 2. Season 1 wasn't a season. It was a full year. And in Season 1 itself, we changed 5 formats. So, कोई consistency नहीं है यहाँ पे. And Season 2 में again we changed the format. And just notice how I'm saying we've changed the format again. And I'm not saying we've changed it for the last time. Because who knows, है ना? मेरा शो है कुछ भी अपना ही है, अपने ही बॉक्स है, अपनी ऑब्जेक्ट्स है, अपना शो है, नाम भी अपना है, कर लेंगे सब. बाय द वे आई एम कोपल. हाय, एवरीबडी नोज मी. अच्छा हाँ, first time not doing with live audience and also just need to make sure. Today's guest, our first guest, is the OG poet and storyteller of the scene, है ना? इन्होंने पूरी एक generation को inspire करा है to fall in love. Yeah, agreed? One-sided love. Yeah, he is one of the most beautiful human beings I know. He is one of the most honest artists I know. He's a great friend. I've heard a lot of his stories. I don't know why I've called him for this episode. But it's because his stories are just so beautiful and so pure that we're all going to have a beautiful time. Yeah? The first episode of Season 2 of Qisse with Kopal, एक ऐसा शो जहां हम सुनते हैं किस्से ख्वाबों के, जज्बातों के, ठहाकों के और बहुत सारी यादों के. Please put your hands together for the best, Amandeep Singh! This is the setup. This is the new format, guys. That's all we are going to do. 1 second, I need some space. You come here. नहीं मैं बता दो यार, सब सही है. Guys, ये फॉर्मेट है. अगर अमन हार जाता है तो अमन is the host and the guest. मुझे Oh. Okay, Aman, hi. Hi, What's Kopal, up? how are you? Good, I'm damn good. excited. I'm getting so much like good energy and vibes. इसको वापस शिफ्ट Hi, कर देते हैं. before Kopal. Hi everyone, कैसे हो आप लोग? Hi, कैसे हो? Nice. 2 लोग मुझे नीचे गोलगप्पे खाते हुए मिले थे. Hi. कैसे थे गोलगप्पे? हमने खाए थे. गोलगप्पे मैं खा रहा था. Rookie mistake. Okay, Aman, what's up? How are you feeling? At this point of time, I am happy and a bit confused, but everything is good. Okay, but okay, I have to tell you the story. Sorry, before we start. I'm so scared. मुझे नहीं पता कोपल क्या बोल सकती है, क्योंकि कोपल को almost सब कुछ पता होता है. I just know too much. You know, yesterday I sent Aman a message. We were in office. And मैंने टीम को बोला इसके बाद देखना अमन कॉल करेगा. And literally then Aman's phone rang. So I know him too well. But okay, this story is about one of our first brand shoots. ठीक है, हम Zomato के लिए. It was I think one of our biggest shoots that we'd done. Like it was a 50-60 people crew. तभी अमन recently viral हुआ था. First year of poetry, ठीक है. And I know the story. And अमन पूरा makeup के साथ ready है. And he's standing on the set. एक पोइट्री उसको रिकॉर्ड करनी है. And there's a good 50-60 people crew. And I'm just standing, you know, पीछे whatever. And the spot boy on the set goes like, दूसरे spot boy को, ये वही सरदार है ना जिसको हमेशा एक तरफा प्यार होता है. And I'm like, wow, bro. That's not how I wanted people to know me, but still, like, somehow love is around, so chalega. Yeah. But Aman's version of love is just also the most magical version of love. So, can't wait to hear those stories. Okay, cool. Should we start? Yeah. Okay, so like I said, we've changed the format of it. Today, I have got some objects and कुछ Aman लाया है. ठीक है? So it's going to be like an interesting, you know, match of stories. Match of stories? Interesting segment of stories? Interesting stories रखते हो कोपल.
Okay, chalo, we'll start. Okay. Will you Yes. pick up or should I pick up? I think you pick up the first subject. There's so much. Yep. Can you guys see? Yep. I'm looking for that. Yes. What are you looking for? The silver thing. Wait. Oh, yeah. So okay. This is a medal. एंड लोग मुझे अक्सर पूछते रहते हैं कि यार कब से स्टोरी टेलिंग शुरू की, कब करना शुरू किया, लिखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया. एंड आई गेस दिस इज द प्रूफ बिकॉज व्हेन आई वाज इन नर्सरी आई वेंट ऑन स्टेज फॉर द फर्स्ट टाइम टू रिसाइट अ पीस व्हिच वाज वेरी सिंपल. तोंद बहादुर पेटू इतना, खाना खाता हाथी जितना, तोंद हो गई इतनी मोटी, पड़ी पेटियां सारी छोटी, या तो अपना पेट घटाओ या नई पेटी बनवाओ. That's it. That was a 6-line poem I ever recited. Can I just add something? Aman was rehearsing something backstage and I was like, kya rehearse kar rahe ho? Now I know. He was rehearsing. And somehow it was nice, it was beautiful, it was magical. And I won the first prize in nursery. And मुझे ना ये medal मिला था और साथ में एक सर्टिफिकेट मिला था. मुझे नहीं पता था ये मेडल और सर्टिफिकेट एक्चुअली होता क्या है. मुझे लगा ताकि सर्टिफिकेट खराब ना हो जाए मैं उसे फोल्ड करके रख लूं. आई फोल्डेड इट, केप्ट इट इन माय बैग, गॉट बैक होम एंड मम्मी को आके कहता एकदम चिल्लाकर, मम्मी आज स्कूल से मुझे हार मिला है. मुझे नहीं पता था मेडल क्या होता है. एंड मैं हार निकाल कर दिखा रहा हूँ व्हिच इज द मेडल. एंड माय मॉम इज सो हैप्पी कि अरे ये तो बहुत प्यारा है. एंड लाइक वो ना साथ में एक पेपर भी दिया उन्होंने, को मैं दिखाता हूँ. एंड माय मॉम सॉ इट and she had anger in her eyes कि ये क्या कर rहा hai. But then that's my encounter with poems, that's my encounter with achievement for the first time. Aww. And ever since that day till now, on my saddest day to the most beautiful days in my life, on the days when I've been the least confident, to the days when I've lost one of my family members, Kopal knows it. It happened lastly in Delhi. I was on stage, and no matter what, that 1 hour, that 10 minutes, that 15 minutes on stage just makes me feel who I am. I never lie on stage. So I guess that's the most beautiful feeling I have, and this is where it all started. Hey, thank you so much for bringing this for us. Wow. इनफैक्ट इसके साथ एक फन फैक्ट है, सॉरी आई एम कटिंग. सो ये जब मैं मुंबई आया था एंड जब मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इसे मैंने ऑलमोस्ट 2 से 3 साल तक अपने वॉलेट में रखा था. एंड जब भी कंफ्यूजन होता था कि यार जॉब छोड़ू नहीं छोड़ू क्या करूँ, आई यूज्ड टू टेक इट आउट एंड जस्ट मूव माय हैंड ओवर इट कि यार ये किया था, जो भी करूंगा यार यहीं से शुरू होगा. So the day I left my job is the day when I took it out from my wallet and kept it back in the cupboard to keep it safe. So all my job days was with this. Wow. ये आपको नहीं पता था. Yeah, this I didn't know. But okay, so listen, nursery, first time you won something for writing, something for performing. You're a kid at that time. Huh? From there to actually being on stage, what did it take? And when I ask this, I mean in terms of your courage, because to pursue your journey as an artist, it takes a lot, right? And also family, because I know that you come from a small town. I know, वहाँ पे convince करना family को, all of those things as a son, it can be tricky. Tell us more about that journey. I guess the most beautiful part about doing this is that I never thought about it. The moment I felt कि ये या वो करना चाहिए इससे related, I did it and it may or may not have worked, but I felt good. Yeah. And I guess जब आप बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं, जो कि अब होता है, क्योंकि आपने इतना कुछ कर दिया, तो अब हम हर एक चीज पे 2 बार 3 बार 4 बार सोचते हैं. Yeah. और जब हम उसे बार बार सोचते हैं ना, तो वो जो मैजिक होने वाला होता है हम उसे निग्लेक्ट कर देते हैं. The magic happens when you have few things unknown. Then is when the magic happens. And I guess मैंने recently कुछ ऐसे लिखा था कि हम छोटे शहर के बच्चे बड़े शहर में आकर खो जाते हैं, खुद को ढूंढते ढूंढते न जाने कब किसी और के हो जाते हैं. Wow. हम छोटे शहर के बच्चे बड़े शहर में आकर खो जाते हैं, खुद को ढूंढते ढूंढते न जाने कब किसी और के हो जाते हैं. मैं सच कहता हूं, मेरा यकीन मानो, वक्त लगता है पर एक दिन हमारे सपने भी पूरे हो जाते हैं. क्या बात है. सुंदर. Yeah, listen, I'm very intrigued by this. Is it too soon to get to this?
I don't think so. It's never too soon to fall in love. But I have an objection. In fact, I have an objection with everyone who is out there with the obsession with sunflowers. The simple reason is, I don't know why, but लोग sunflower को एक sunflower देते हैं लोगों को, जो कि नहीं देना चाहिए. Now I don't know how much of this is true or not. मैंने एक दिन रिसर्च करने की कोशिश की थी, पता नहीं क्यों मुझे एक भी आर्टिकल नहीं मिला, पर मुझे जहां तक याद है मैंने एक दफा ये आर्टिकल पहले पढ़ रखा है. सो जब मुझे एक भी आर्टिकल नहीं मिला तो मैंने दोबारा रिसर्च नहीं की, पर मुझे लगता है और हम मानते हैं, आज जितने भी लोग इस रूम में, हम ये मान के चलते हैं कि सनफ्लावर कभी भी अकेला नहीं देना चाहिए. रीजन, बिकॉज दिन में सनफ्लावर सन की तरफ देखता है और रात में जब सूरज नहीं होता है तो सनफ्लावर्स एक दूसरे की तरफ देखते हैं. सो व्हेनेवर यू आर गिविंग सनफ्लावर्स टू समवन, मेक श्योर गिव इट दो, at least in couples. Wow. And I am a sunflower. I am again looking for someone who can look at me. ये वाला. यार That's actually the story behind it. प्यारी बातें करते हैं. हाँ, मतलब it's actually कि ए आसमां तेरे लिए ज़मीं लाया हूँ मैं, मुकम्मल है तू तेरे लिए कमी लाया हूँ. ए आसमां तेरे लिए ज़मीं लाया हूं मैं, मुकम्मल है तू तेरे लिए कमी लाया हूं मैं, तेरी होकर भी तुझसे दूर भागती है सूरज, देख तेरे लिए रोशनी लाया हूं. अमन, हाँ बताओ. Promise me next time whenever you are giving someone sunflowers, जो जनरली नहीं देते लोग, तो देंगे तो प्लीज एटलीस्ट दो देना या ज्यादा. है हमारे पास, और मिला देते हैं. हाँ. दो ना एक. We have. ये लंबा को मतलब इसे ऐसे रख सकते हैं, ऐसे. Okay, dude, I think this can be like. Yeah, this can be. But listen, Aman, कितनी प्यारी बातें करते हो. यही प्रॉब्लम है. पोएट्री लिखते हो, इससे मुझे ये एक है हमारा यहाँ पे बॉक्स में परमानेंट. Okay, this is surprising. ये मैंने नहीं बताया था. हाँ, ये मैं बताती हूँ. तो यार सुना है ऐसा मैंने, सुना है, आप लोग बता सकते हो सच है कि नहीं है, कि यार ये जो पोएट होते हैं इनसे लड़कियां पट जाती हैं जल्दी. कहाँ सुना है बताओ, मैं देख कर आता हूँ. इम्प्रेस हो जाती हैं, क्रशेस होते हैं. कहाँ सुना? जरा बताओ कहाँ सुना है. But the problem is, at least मेरे साथ ऐसा होता है. If I tell someone कि यार I really feel that you are good, उनका पहला सवाल ये होता है कि अच्छा मेरे अलावा कितने लोगों को और बोला. Oh. And it's a very tricky place because you know you're not telling it to anyone, but they believe that नहीं, ये तो हर एक को कहता होगा. तो मतलब बेसिकली शब्दों पे विश्वास नहीं हो पाता है. हाँ. क्योंकि उन्हें लगता है कि हम शब्दों का कारोबार करते हैं. But what is your definition of this? इतना लिखते हो प्यार के बारे में. यार, for me love is the most simple thing. उसमें कुछ कॉम्प्लेक्शंस नहीं है. आपको कोई एक इंसान, कोई एक चीज अच्छी लगती है, आप खुश हैं उसके होने से, that's it. बाकी जो बीच के माजरे हैं, जो ऊंच नीच, दाएं बाएं, आगे पीछे हैं, अगर दो लोग या दो चीजें साथ में रहकर खुश है तो वो सब रिजॉल्व हो सकती है कॉम्प्रिहेंशन एंड कॉन्वर्सेशन से. वाह वाह. अमन यार जावेद साहब कहते हैं लव इज रिस्पेक्ट. लाइक इफ यू कैन रिस्पेक्ट समवन, if you can acknowledge their problems and their happiness and their needs and figure out ways in which both of you and them can stay together, nothing is more beautiful than that. It's so true. Yeah, if you find respect and love, that is the most beautiful form of magical ingredient. Yeah, लोग ignore कर देते हैं. वो chemical X है, pop of girls वाला. Papa fans in the house. Only Aman. Oh, I love Pop of girls. And Muskan. दिल जुड़ा हुआ है. पर आजकल पता कैसा होता है? बता दे. आजकल होता है कि इश्क नहीं हुआ है तुमको, फिर से कोई वहम हुआ है. इश्क नहीं हुआ है तुमको, फिर से कोई वहम हुआ है, सपनों की बातें करके तुमसे वो नींद तुम्हारी ले जाएगा. यही होता है आजकल. तो तुम ही हो भाई, मेरे दिल की सारी बातें. यही होता है. खैर, कोई नहीं गाइस. बहरहाल आगे चलते हैं. अरिजीत सिंह ने गाया है, कहते हैं खुदा में जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को बनाया है ना. ये है सनफ्लावर कहीं ना कहीं दूसरा. हाँ,
हाँ, कोशिश करने ये जो ट्राई वाला फॉर्मूला है ना, बढ़िया है. Good. Nice. Keep it up. Okay. Should we go to the next round? Should I pick? You want to pick? You pick. डर लगता है पर Listen, I really want to address the elephant in this box, rather the penguin in this box. What? This is a scary story. Like, no, it's not a scary penguin, but Do you want to do the story? yeah, we can do it. Like, Okay. Yeah? Or later? Now? कर सकते हैं. Okay. आप edit पे कहीं पे भी लगा देना. So, around 22 years it took me to get this sweet little penguin in my house. And while growing up, I've been a lonely kid. Like, and I guess ये हम सब होते हैं. हम सबका अपना एक डेफिनेशन होता है ग्रोइंग अप कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए. एंड वो डेफिनेशन हमेशा उन चीज़ों का होता है जो हमारे पास नहीं होती है. So all of us somehow feel that we have grown up lonely. And so मैं खेलने जाता था and मैं जब भी जोन आउट होता था तो मैं ऐसे सीधा खड़ा होकर जोन आउट हो जाता था. There have bन times क्रिकेट की मैच चल रही, मैं जोन आउट हो गया हूँ. And I'm thinking something. I'm thinking of how beautiful catch I'll catch. और उतने में कैच आके मेरे ऊपर लग गया है. और I'm thinking how beautiful a six I'll hit and I'm just standing with my bat there. And my friends और जो भी थे आसपास वो मुझे पेंगुइन करके चिढ़ाते थे. And I hated that. I hated to my core. To a level to a limit that मैं घर आके रोता था. I stopped watching Oswald क्योंकि उसमें पेंगुइन था. And I used to cry a lot because that is something which was out of my control. And कभी समझ में नहीं आता था कि लोग क्यों चिढ़ा रहे हैं. And जितना ज़्यादा लोग चिढ़ाते थे उतना ज़्यादा खराब लगता था. And I have grown up lonely. I believe nucleus family, no one around. I used to. It's very rare. I never mentioned this before, but he would relate. Growing up as a Sardar kid is very difficult in a place where there are no Sardars around, because everyone will make fun of you. कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, and you have a big hair, and so half the time people will call you, "Hey, तू तो लड़की है, ये तो वो है." I was the only Sardar boy in my class, and a lot of challenges. The scariest part. Oh my God. First day of college. I guess ये किसी को नहीं पता है. I'm saying it out for the first time. First day of college. कुछ सीनियर्स आते हैं रूम में रैगिंग करने. And अब आप फ्री बैठे हो यार, पहली बार आप गए हो. So I'm just sitting, थोड़ी सी beard है वो है. And 5 of the boys are standing there and their questions are, पहले तो रैगिंग कर रहे हैं एक दो. And चीज़ें बोल रहे हैं. Then they start questioning. पहले लड़के से, वो तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड थी, यहाँ पर कोई गर्लफ्रेंड है, ये वो. 4 of them they ask, they come on me and they're like, तुझे देख के तो लगता ही नहीं कि तेरी गर्लफ्रेंड होगी. A boy going to college, outside college for the first time, he's in his own घर का attire where the beard is इधर वो. It was one simple sentence. It's been around 9 years. There are days when I still remember it and recall. And that's why when I left college, I got this sweet little penguin. Because I learned this the hard way, that the best way to deal with a problem is to acknowledge it. कि वो है, the elephant in the room. It's okay. I am the way I am. There'll be a lot of things that I may not be able to do. There are going to be a lot more things that I will do and you will not know how to do it. I can talk to girls about how to have good hair. You all can't. So I keep this in my room, the sweet little penguin, to remind me that everyone is going through something. If we all acknowledge our penguin, the elephant in the room, keep it with us, we'll figure out. It's all about figuring out. We'll figure out. Man. Pingu. I think every object that Aman is taking out of the box is getting a whole new meaning after the story he's sharing. Like whether it's a sunflower, a heart, or a penguin. Every time I think of a penguin, I think I'll address the penguin in my life or in the room because it's so important. But I mean, I think a lot of people watching, and I think audience में भी बहुत लोग के पास, you know, वो insecurity growing up होती है. People bully you for that, and I think people are bullying, उनके पास खुद की insecurities होती हैं, which is why they end up bullying you. As a young boy, I'm sure it must have been like very hard for you to go through that phase. But क्या point आया life में where you were like, no, you know, I am who I am, because like the way I know you today, I think you are very comfortable the way you are. Like, you know, you are the most honest person. तुम अगर किसी room में walk भी कर रहे हो और you know, you don't
care कि this is who I am and this is who I'm going to be no matter मैं कितना बड़ा आर्टिस्ट बन जाऊँ जो भी है मैं यही इंसान हूँ मैं यही रहूँगा. तो यार वो जर्नी कैसे तय होती है, कैसे तुम ग्रो आउट करते हो उस फीलिंग से और इस पेंगुइन को अपनाने के रास्ते तक, वो क्या जर्नी होती है? I think we missed out one thing because of that. होनी चाहिए थी. I call it. It's a very niche thing. Again, first time to the world. कोपल आप बहुत कुछ निकलवा रहे हो. खैर. ये मुझसे बहुत लोग बोलते हैं. I call it my pajama theory. Oh. I'll tell you why. There's no one day that everything will change for you. It has to be very slow, very steady. And so मुझे सबसे ज़्यादा जो बुली किया जाता था स्कूल में वो इसलिए था कि मैं बहुत पतला था. तो उससे लड़ने के लिए मैं जैसे ही 6th स्टैंडर्ड में गया तो फुल पैंट्स हो गई थी एंड आई वाज वेरी स्लिम सो आई यूज्ड टू वेयर अ पजामा इनसाइड माय पैंट्स एंड आई रिमेंबर हॉट समर्स ऑफ जमशेदपुर वेरी हॉट प्लेस 39-40 डिग्रीज बट मैं मोटा सा एक पजामा पहन के अंदर जाता था, पसीने आते रहते थे मुझे, स्टिल आई यूज्ड टू वेयर इट बिकॉज नो वन एवर टोल्ड मी स्लिम या पतले हो आफ्टर दैट. द पजामा मूव्ड टू a fat short when I moved to college, and today I don't wear either. So I guess that's how it works. Figure out your comfort zone. Figure out your way of numbing the voices, not just outside but inside. I know this is not the right way. Me wearing pajama troubling me wasn't the right way, but लोग नहीं बोलते थे and वो अच्छा लगता था and that gave me the confidence. So today if there's someone who tells me you're very slim, I was like तू देख अपने आप को भाई, मुझे dieting भी नहीं करनी पड़ रही. People are jealous. I was like हाँ मैं हूँ पतला, क्या करूँ? I can't fight that. I eat. If you sit with me on a table, I'll eat more than you. Kopal knows that. My metabolism is good. I'll live long. You see. So I guess it's doing that one small thing every day to fight. Not just outside, but inside. It will always be a long journey. And the hardest thing to say, or that I've learned, is it's a sad thing, but it's a good thing that there's no one who is going to be around. It's only you. There are going to be days when you'll have amazing friends. There are going to be days when you'll have all your beloved people around you, but there'll be nights when you're just alone in your bed and you're trying to fight and no one knows you're fighting. And apart from your pillow, so make sure you're prepared for that in whatever way you can. Wow. Yeah, I think becoming friends with your pillow is also very important part of I your need to journey. keep changing them again and again. वरना एक पिलो को सारे राज पता होंगे यार, वो प्रॉब्लम करेगा. Wow, man, but thank you for sharing that with us. Yes, so the pajama theory is true. देखो अभी नहीं है कुछ. Yeah, I think that's so true. There's no, I love what you said कि there's no one day, मतलब वो it's a process and बहुत cliche quote है यार, मैंने बहुत छोटे पढ़ा था but it stuck with me कि a journey of 1,000 miles always starts with a single step. And तुम life में जो भी कर लो ना, you can always come back to this quote. क्योंकि तुम कहीं भी चालू करोगे ना तो वो पहला स्टेप तुम्हें लेना ही पड़ेगा. तो I think whether it's your internal dilemma, whether it's what people are saying, always starts with that first thought, that first step, that first decision. And yeah, and you'll be alone. Like it's just, I'm not saying lonely. You'll be alone. You'll have a lot of people around. You'll have your parents. You'll have your partner. But there are few things which you'll acknowledge only alone. You cannot make your partner feel that how I was bullied throughout my life for being slim or for being the only Punjabi boy. And I don't want my partner to be feeling that. Unke alag masle hain. You're going to be alone and it's a good way. In a good way, acknowledge that and then fight with it. Or figure out a way. हो जाता है. Yeah, हो जाता है. एक जिंदगी है यार, अपने हिसाब से जियो. जो दिन पार हो गया वो दोबारा नहीं आएगा. ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ रही है, जल्दी मरने वाले सब. But Aman यार 27 8 No, what? 27 एज बोल रहे थे. मैं बता रहा हूँ यार 28 29. Okay, sorry, I have to tell this story now. Now that this has happened, I was saying the year 2017, but just taking a short detour. कुछ दिन पहले मैं ऑफिस से घर आई and do I know this story? No, I don't think so. मैंने गाड़ी पार्क करी अपनी and there's this lady in my building जिनसे मेरी सिर्फ hi hello वाली relationship, you know, I'll just be like hi, she's like hi, we don't know each other's names also. She parked the car next to me and we both got out of the car
एंड हम लोग लिफ्ट तक वॉक करे तो हम स्मॉल टॉक करने लगे एंड शी सेड हाय व्हाट्स योर नेम व्हाट डू यू डू वेयर इज योर ऑफिस यू नो टिपिकल स्मॉल टॉक वी डूइंग एंड देन वी वॉक टू द लिफ्ट एंड वी एंटर द लिफ्ट एंड शी लुक्स एट मी एंड she goes like so you're 25 no and I'm like I'm 32 and she's like I was asking the floor मैंने जिस नजाकत से बोला है ना कि मैं 25 लगती हूँ I want to meet that lady. Dude, and the thing is, I stay on the 26th floor, so हम लोग को basement से 26 तक का सफर तय करना था इसके बाद. And she is just looking at me like. Okay, what I was going to ask you was 2017 is when you did your first ever show. Yeah. Yeah. It's been 7 years. It's been 7 You years. have started with lineups, did multiple viral videos, did tours on curated lineups, went on to do solo shows in major cities, went on to do solo shows across the country, went on to do shows internationally. Now you're writing a brand new show, Dhak Dhak. हाँ जी. Tell me about a moment when you messed up on stage, no? A lot of them. I guess a lot of them, and I guess हर एक मोमेंट से कुछ ना कुछ सीखा है. कभी पता चला कि यार हम कम प्रिपेयर होकर आए हैं. कभी पता चला कि यार थोड़ा ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे. कभी पता चला है कि हम बहुत ज्यादा फंबल कर चुके बिकॉज वी आर हाई ऑन एनर्जी. कभी पता चला है कि यार शायद आई वाज नॉट ऑन अ गुड मूड टुडे. I was way too tired on some shows because I did not eat well, and there's so many of them. Each show, I believe till the day I keep doing these shows, each show will teach me something, a small ingredient, a small beautiful thing, which eventually will work out in a magical way. Like this sunflower. आप नहीं देखेंगे अगर आप रोज रोज उसे देख रहे हैं कि वो कितना बदल रहा है. उसके एक एक लीफ एक एक करके निकलते हैं. आप जब उसे रोज देखेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि यार ये कितना बढ़ा या कितना बदला या कितना नया हुआ. पर जब आप उसको पहले दिन और उसके आखिरी दिन में देखेंगे तब आपको दिखेगा एक पूरी जर्नी. सो आई गेस every show is a bit of mess, every show is a bit of confidence, every show there will be one person whom you have pissed or you think is not impressed, even though that person is not expressing. There'll be so many shows when there people will go all mad and you'll be like, yaar maine itna acha to nahi kiya. Yeah. So it's an amalgamation. And the most amazing thing that I've done is recently I was performing for Haley as a special act in her live show, and एक और artist थे, मैंने उसका नाम गलत ले लिया था. I just went on stage and his name was something, I was like Raghunath. And मुझे नहीं याद आ रहा था, and that person is looking at me, and it happens. फिर वापस आके मैंने हेली का नाम भी गलत ले लिया. And I was like, this is a day when I just keep forgetting names. And there'll always be that one person in the comment section who will go like, क्या पूरे टाइम रोता रहता है. अरे मत बोलो. And they're all fake profiles. They're all fake profiles. It's just life. It's just life. But Aman, सबको खुश नहीं कर सकते आप जिंदगी में, करने की जरूरत भी नहीं है. Need ही नहीं है. Exactly. But Aman, there's a right. artist band in this that you have got. Oh yes. Is there a story that you want to share with us? I don't know if it's about the band or It's about the band. It's about the band. It's Okay. about the band. It's about the band. So these are basically the bands that you get like. When you perform at an event, Yeah. हाँ. you can wear it. I'll take it off. नहीं निकला तो? मैंने बैग से उतारा है, निकलेगा. Tell me. So, I guess जैसे एक आर्मी का कोई ऑफिसर या कोई एक हायर रैंक का इंसान अपने बैचेस पहन के जाता है, I believe each and every profession should have something to show, not for outside world but for inside. यार हम खुश तो होना चाहिए, कुछ तो अच्छा लगना चाहिए. So I was once at Bhubaneswar airport and I saw this guy, a photographer, with his bag full of these bands, and I asked him कि भाई ये क्या है? And उस point of time पे मेरे पास एक बैंड था सिर्फ. And he told me कि वो जितने भी इवेंट्स कवर करते हैं या जहाँ पे भी जाते हैं परफॉर्म करने, जो भी होता है वो हर एक बैंड लगाते हैं. And it's a memory for him to remind that oh my god, my journey has been this long. And I was like, oh my god, this is so good. So like as Kopal mentioned, first step, एक बैंड था मेरे पास, मैंने वो लगाया. Today my bag is full of them. There are around 25-30 of them. There are a few bunch of them which are just, yeah, it's somewhere back.
There are 30-40 of them on the bag, and every time, again, on a not so good day, like how, in a very good way, how an army officer remembers his batches of good days, and any other person from a profession remembers their batches of good days. I just look at my bag, talk to it, and say that, okay, we have come a long way. Wow. And I have two Amazing. other bags, जो अब छोटे bags हैं, उनके ऊपर भी 5-5, 10-10 लगे हुए हैं. And yeah, इसमें भर गए थे बहुत ज़्यादा. So yep, it's a good way to remind yourself that you have come a long way. हम भूल जाते हैं अक्सर बताना. यार, again, it boils down to the same thing that बहुत ज़्यादा pressure डालते हैं हम अपने ऊपर. ये कर लो, वो कर लो, सब कर लो. Let there be some days when you just lie down in your bed and look at whatever you have done. It may be good, it may not be good. We're just a small tiny particle in this universe. इधर उधर हो भी गया थोड़ा तो कोई problem नहीं है. चलता है. Yeah, it's so important to celebrate the wins. Yes, it's so important. And you forget, like life just keeps happening, and then you look back and you're like, I was just doing one thing after the other, and I never stopped back to cut a cake for myself. Or, just call my friends or family over and be like, hey, let's celebrate this little thing. Or just even do a little happy dance in your room, even that celebration, we just forget to do it. The happy dance reminds me you should come for the new show Dhak Dhak. It has a dance segment. Please. And उसका teaser आने वाला है. I guess जब तक ये जाएगा तब तक आ गया होगा. But अगर आने वाला है तो please आप देखिए. और अगर ये जाने के बाद आ गया तो please वापस से share करिए. It's important. Guys, since we are talking about celebrations, it brings me to the reason why I'm doing this show. To eat ice creams. Yeah, should we move to the next segment? Yes. Yeah? Woo! Woo! Thank you. इस segment को खत्म करने से पहले हाँ. राहत इंदौरी साहब का एक शेर है जो मुझे बहुत पसंद है. And I guess it clubs everything that we are doing कि जवानी में जवानियों को धूल करते हैं. जवानी में जवानियों को धूल करते हैं जो लोग भूल नहीं करते भूल करते हैं. क्या बात है. Guys, now we'll move to the next segment, which is my most favorite segment. So this segment is called Keep It Honest. It is a rapid fire round. Okay. Except there is no fire. There is ice. There is ice. I don't know why I'm friends with this girl. You know. But okay, so there's ice in it, and the idea is that I'll just throw words at you. These could be, I could give you names of people, these could be objects, anything, and you have to tell me quick, rapid stories that come to your mind. The first thing that comes to your mind. It could be philosophy, stories, anything. And we'll eat ice cream, nick ice cream while we're doing it. Are you ready, Aman, for Keep It Honest, powered by Nick Ice Creams? Woo! Yes! But Aman, good job today, huh? You chose your own, this thing, decided what ice cream you want to eat. Oh, yes. So quick anecdote about Aman. He's just the first person to sit with a menu and decide what to eat. Every time you go to a restaurant with him, he'll just be like, Kopal. Every time, last 7-8 years, this is the story. Every time, Kopal. And if he's sitting with a menu for 1 hour, he'll just... So I'll tell you actually, मेरे साथ simple logic ये है कि आप जिंदगी के बड़े डिसीजंस बोलो मैं ऐसे ले लूंगा. शहर बदलना है, घर बदलना है, ऐसे. आप मुझे बोलोगे मेन्यू से सामान निकालना है, कौन से कलर के कपड़े पहनने हैं, किस रास्ते से जाना है, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ. I don't know why, but that's how I live. बड़ी चीजें करेंगे ना, छोटी चीजों को कर लेंगे. कोपल है. Whatever this is tasty. I don't know why. Okay, Aman. Hi. Cheers. Woo. Woo. कौन सा फ्लेवर खा रहे हो? This is something very nice which is called gulab jamun because it's actually delicious. I'm having mixed berries. Oh, nice. चलो सवाल. Amazing. Okay, so Aman, I'm going to throw words at you, and you will give me quick stories. Quick stories and while eating ice cream. While eating ice cream, and the idea is for us to finish this round before the ice cream finishes. And वो हो जाएगा. हाँ. Okay. Shahrukh Khan. First love. Sorry, Dev. तुरंत कटे. I never fell in love with Shahrukh Khan. A friend named Rishi made me fall in love. मेरे 12th standard पूरा उसने हमें शाहरुख का पोस्ट करने सिखाया. सिर्फ मुझे नहीं, हमारी पूरी क्लास को. So our entire batch of 2013,
ICSE school LFS is in love with Shahrukh only because there's this one mad guy called Rishi Aditya. वो शाहरुख का पोज एकदम परफेक्टली करता था एंड हम सब फैसिनेटेड थे, हम सब सीखना चाहते हैं एंड इन द लॉन्ग रन वी लव दैट यार एक तो ऋषि भी उतना ही दीवाना है और शाहरुख भी उतना ही दीवाना है और हम भी उनके दीवाने हैं। अभी करो करेंगे So I'll show you how it करेंगे is. नहीं उतना करेंगे कर लेते बाद में कर लेते बाद में करेंगे डोंट वरी तुम्हारे साथ करेंगे। We'll do it. हाँ next question. No, sorry you have to tell them about your messages. मेरा फोन है किसी के पास? I sent Shahrukh Khan all the messages that how I am feeling, what I'm doing. I'm pretty sure he's not going to reply, but the day he sees the messages, he will see my grocery list. अंधेरी में एक कैफे जहां बहुत अच्छी आइसक्रीम मिलती है, उसके बाद आप देखोगे कि मेरा दिन कब खराब जा रहा है तो मैं शाहरुख को बोल रहा सर आ जाओ एक झप्पी दे दो और बेस्ट ये मैंने मल्टीपल टाइम्स भेजा है, भैया घर पर हो क्या चाय पीने आओ? And I have proof of that. Over the period of last 1.5 years, I've actually sent him all the messages like these. भैया घर पर हो आओ क्या चाय पीने? And the best, I guess this is the best question that I've asked. अमन आइसक्रीम को हाथ में रख के बात करना। I guess this is the best question that I've asked. वो आप लोगों ने ये देखी है जवान? Of course. हाँ, so जवान में there is a shot, there's a song which is shot at Bandra Fort. I don't remember the song nicely, but there's a song which is shot at Bandra Fort. So I had a question, and I asked him कि सर बैंड्रा फोर्ट पे शूट था, आप अपने घर से वहां तक कार में गए थे कि पैदल? I just hope he sees those things. Okay. Umbrella. How I Met Your Mother fans in the house? Yellow Umbrella, that's it. I saw that show during COVID for the first time, and I fell in love because I felt कि मैं Ted Mosby हूँ. It will take me a very, 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 very long time to find the right person, but that right person is going to be as perfect as the yellow umbrella. मेरे घर पर मेरे पास एक बड़ा सा येलो अम्ब्रेला है, उसके ऊपर मैंने अपने इनिशियल भी स्क्रिबल करके रखे हैं। जिन्हें हाउ आई मेट योर मदर देखा उनको पता ये क्या है। हाँ, सिक्के। उम्मीद के सिक्के? You tell me a story. So there are a lot of सिक्के का stories. Okay, tell me one. So उम्मीद के सिक्के is one thing that I do, and मुझे लगता है again as a story it is कि भाई हम सबकी जेबों में पैसे होते हैं, वैसे हम उम्मीद भी रख सकते हैं। All you need to have is few coins of hope on the day when nothing around is working. I am damn sure वो सिक्के चलेंगे हर जगह, हर देश, हर मुआयने में, हर तरीके से। थोड़े से उम्मीद के सिक्के जेब में हमेशा होने चाहिए। That could be in any way that you want. रखो, काम आएंगे। Wow. Okay. Train. Ruskin Bond. I guess it's a very long story, Kopal. Not exactly a true one. Okay. Not exactly a direct one, but 12th standard, when I was in very in doubt कि मुझे नहीं पता क्या करना क्या नहीं करना, I hated one subject. That was chemistry. बहुत ज़्यादा। हम 11th स्टैंडर्ड में थे इनफैक्ट एंड 12th स्टैंडर्ड को हमने फेयरवेल देना था एंड आई वाज द वन हु वाज होस्टिंग। अब मैं ना दूसरे स्कूल से स्कूल में आया तो ज़्यादा दोस्त नहीं थे मेरे एंड ज़्यादा चीज़ें नहीं पता थी, बट समहाउ आई मैनेज्ड टू होस्ट द इवेंट. आई होस्टेड द इवेंट एंड इट वेंट रियली वेल. Next day, the teacher I hated the most, chemistry teacher. I'm sorry, Mrs. Senkutta, if you're hearing this. She knows because she hated me too. Or I would rather say she did not love me much. And next day, school आता है हम लोग, Monday morning है. English की class चल रही है. Ruskin Bond की कहानी पढ़ाई जा रही है वहाँ पर. The night train at Deoli, I remember very nicely. And our chemistry teacher just moves like barges inside the room. And I'm like, कोई तो आज क्या, किसी पे तो फटेगी अब. And she comes and she's like, where is Aman? And I'm like, yes, ma'am. I'm like, किस लिए? अब तो class भी नहीं है chemistry की. And she's like, stand up. I'm like, yes, ma'am. And she's like, you know what? During the event that you hosted 2 days ago, you were par excellent. मुझे मतलब भी नहीं पता था उस शब्द का तब तक. मुझे Google करना पड़ा and she was the first lady who told me that go and make a career out of it. You are going to be so good at it. The teacher whom I did not like much and she did not like me either because I was very bad at chemistry. So you never know from where your inspiration or hope comes. So अगर किसी ने randomly आपको कुछ कहा कि ये करके देखो बहुत अच्छे हो, वो अपनी नजर से आपको देख रहा है, ये चीज याद रखना, शायद आप नहीं देख रहे.
हाँ. मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त है रमनीक, वो अक्सर कहते हैं कि बहुत पास से बहुत चीजें धुंधली नजर आती है, तो जब आप दूर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा आप खुद एक बहुत बड़ी चीज है। Very nice. Wow. क्या बात है man. थैंक यू। Wow. Okay. Do you have a pahar story, mountain story? A lot of them. I have this amazing myth in my mind that पहाड़ों पर हर एक चीज का solution है, and I never want to break it. The reason because once I read this book called बहुत दूर कितना दूर होता है by मानव कौल, and उसमें पहाड़ों का जिक्र है बहुत ज्यादा, और उस किताब के बाद इनफैक्ट इन अ वेरी लॉन्ग पीरियड इन माई लाइफ आई बिलीव, एंड मैं ये मानता हूँ ये बहुत खूबसूरत चीज, अगर आप भी कोशिश करेंगे, आप जो भी कहानी पढ़ते हैं, जो भी फिल्म देखते हैं, जो भी एक नया किस्सा जानते हैं, कोशिश करिए उसे जाकर जीने की, क्योंकि जब आप उसे जीते हैं ना तो आपको उस कहानी के सच होने का यकीन हो जाता है और उस कहानी की उम्मीद आपकी जिंदगी की उम्मीद बन जाती है। So that's the reason I love mountains. I try recreating How I Met Your Mother. I try going everywhere and doing Shahrukh pose. My first day in London after I'm done with the show, I moved across the entire London city only to go to all the places जहाँ छल्लम गाना शूट हुआ है और वहाँ पे शाहरुख का पोज करना है। यशराज के पास बहुत पैसे हैं, सारी जगह अलग अलग कोने में, आपको पता ही नहीं चलेगा, सारी जगह अलग अलग कोने में एक गाने में क्लब कर दी गई है। हो गया। ये आवाज आ रही होगी? ठोकने की आवाज है, ठक ठक ठुक ठक। रुक गई। ओके, वापस चालू होगी। एक बार देव चेक करना प्लीज। ओके, आई हैव वन लास्ट वर्ड। ये अच्छी है, सच में अच्छी है। झूठ थोड़ा बोलूंगी मैं। Genuinely अच्छी है। अमन, honestly crafted ice creams. ईमानदारी की आइसक्रीम। And they're actually, I mean, you'll all eat it. They're like super creamy, thick, and also 0%. अरे मतलब वो सब नहीं है यार, स्वीटनर नेचुरल है सब। लास्ट क्वेश्चन। हाँ, मिरर। मैं याद कर रहा हूँ मैंने आपको कौन सा किस्सा बताया था। मुझे कोई नहीं, मेरे का कोई किस्सा नहीं मैं बताया तो एम ही ऐड कर दिया। एंड मेरे ऊपर प्रेशर आ रहा है कि मैंने कुछ तो बताया, कोपल ने इसीलिए मेरे ऐड किया। नहीं, मेरा शो है। कुछ भी लिख देती हूँ मैं तो। It's going to be a small trigger warning, but very strange. I guess if you're confident enough to stand in front of a mirror in the least amount of clothes that you can wear for yourself, look at the person there on the other side of the mirror in the eyes and be happy about what that person has done or will be doing or is thinking. Wow. If you are able to do that, you have lived a successful life. No amount of money, no amount of fame, no amount of anything else on this earth can prove that the person who can look into his eyes in front of a mirror with the least amount of clothes or the least amount of nakedness that person can have can define कि आप अच्छे हो या बुरे हो. You know you're having a good sound sleep. If you're having a good night's sleep, if you believe that you can achieve things and you are a happy person, that's all. A mirror is the most honest thing that can tell you that. Wow. और सवाल निशब्द ही कर दिया। नहीं है। Wow, bro, yeah, it's and so true. So true for everything we do in life. I think हम it सबसे comes down to ज्यादा that. झूठ खुद से कहते हैं, सबसे ज्यादा झूठ किसी और की कम की हुई चीजें को हम नाकामयाबी कहते हैं और अपनी कम की हुई चीजें को कहते हैं कि अरे हम बस स्लो हैं, हम लेजी हैं. So the day we start measuring all of us in the same parameters, which is almost next to impossible, because आपके excuses आपका valid reason होता है, किसी और के excuses उनकी excuses होती है. So अपने आप से झूठ थोड़ा कम कहते हैं. We know we are not able to do that. It's fine. We'll figure out a way. We know we are not happy in something. It's fine. We'll figure out a way. Acknowledge it. That's the most beautiful thing you can do. Acknowledge what you believe and don't bluff yourself for that. If you're able to do that, make a good story around it. Like, I know Shahrukh will reply to me one day. I know he might not. But the day he replies, I have a good story to show कि भाई देखो इस दिन मैंने धनिया खाया था और इस दिन जो मैंने आइसक्रीम टेस्ट की थी, मैं निक वाली भी भेज दूंगा कि सर निक की गुलाब जामुन आइसक्रीम खाओ, माशाल्लाह क्या ही खूबसूरत है. Wow. So yeah. Wow, Aman. Thanks, This was so much fun. Thank you.
being funny, vulnerable, honest, everything at once. I think that's just you in general as a package as well. So I try. Thank you so much. Cool. Now we'll quickly move to the audience segment. I'm going to take a couple of questions from the audience, and then we will recreate the SRK pose. With, Oh, of course. you'll I'll teach you. somebody. I'll teach you. Okay. Questions? Ha. How do you move on when you were in love with your best friend? शादी हो गई यार उसकी. ऑप्शन ही नहीं दो अपने आप को लाइफ में. No, I guess the best way that I believe in moving on in any kind of relationship is tell what you're feeling, acknowledge it, and then let that person go and you also leave. The worst part that we do as one-sided lovers are we let that person go but we do not leave. You should not trouble yourself for that. Just leave. It's fine. That's something I've learned recently. It's fine. आज ही हम बात कर रहे थे. It's okay. You're a human being. You might fall in love with a lot of people, and that's obvious. There's a quote that I've kept on my study table, and I guess that's the most beautiful thing I can do. You are yet to meet all the people you're going to fall in love with. Why to devoid someone else of the love that you can bestow on them because someone did not acknowledge it? हो जाता है, मिल जाते हैं. And I think when you're not able to move on, तुम्हें लगता है कि तुम यही तुम्हारी लाइफ है, तुम उस लूप में घूमते रहते हो बट तुम वो भूल जाते हो कि यार अभी तो बहुत लाइफ बाकी है, तुम बहुत लोगों से मिलोगे. तो उसको जूम आउट करके एक अलग लेंस से देखना, वो लेंस बदल के देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर यू टू नो कि यार अभी तो कितना कुछ बाकी है यार करने को लाइफ में. इस लूप में कब तक फंसे रहोगे, है ना. फ्रेंडशिप बैंड वापस ले लो. देना ही and it has happened. But after a point, I just stopped talking to that person, and then उसका मैसेज आता randomly. I miss you. Why aren't you messaging me? I'm like, हाँ, क्यों? Make sure वो वाला line वो मैं सीख गया हूँ कि नहीं है, कोई बात नहीं. I had this for you. Thank you so much. I wanted you to know this. It's not from your side. It's great. That's how consent works. It's great. I just wanted you to know it. And the reason why I'm not being more friendly with you is because मैं इससे याद आऊँगा, मैं तो डूब जाऊँगा, तुम डूबोगी नहीं. फिर मैं अकेला और मेरे को तैरना भी नहीं आता है. Okay, next question. Yes, ma'am. फिर हम एक ही अच्छा ठीक है. दो तीन लोगों ने पूछा quickly. How do you face yourself, especially when you make a mistake? Like, how do you practice self-compassion and not go into a bashing zone? I do say a lot of things to myself, and I guess that's a part of the process. You need to go through that guilt. कुछ बुरा नहीं होगा तो तब तक किसी अच्छे तरफ कैसे जाओगे आप? कुछ खोकर जब तक कुछ खोगे नहीं तब तक कुछ नया कैसे पाओगे आप? So it's there. It's a part of the process. It's like saying that you have hurted yourself, but you won't stitch. You won't clean the wound. The guilt is cleaning the wound, and then you need to stitch it. Don't leave that wound open. So go ahead of that. Wow. Okay. अच्छा pressing question है तो let's do one more. हाँ. Yeah. So दो बोल. He's like yeah pressing है हाँ. Quickly we'll answer. there's a saying that if you love someone, let them go. हाँ. But as we know, इतना आसान नहीं होता to let go of that person. Yeah. And for people who have always been left, उनको यही बोला जाता है कि to move out of a toxic situation, you have to leave before you get left. So I could be right, but I don't believe in that. I believe it is important for you to let go the person. Because जबरदस्ती से कितना भी खींच के रखोगे तो आपके हाथ पे जो धागे हैं उसकी निशान आएंगे और आपका हाथ कटेगा. If you let go the person, if that person has to come, will come. और अगर आप उसे जबरदस्ती रोक रहे हो तो फिर उसमें मिठास नहीं है ना. मिठास तो नहीं का आइसक्रीम में. और आप दोनों साथ में आए हो क्या? आप दोनों की प्रॉब्लम सेम लग रही है. आई थिंक आप लोग को बात करनी चाहिए एक दूसरे से. आपको याद है मेरे को बताया था एक स्टोरी के बारे में? सब चीजें. He's the तो प्रॉब्लम क्या है? Excuse. यही बेस्ट फ्रेंड है. ओहो. बताओ तुमने क्या क्या सलाह दी थी? मैंने कुछ सलाह नहीं दी. यार खुशी खुशी रहोगे तो सबके साथ रह सकते हैं. नहीं रहोगे. अच्छा तो तुम इसके लिए पूछ रहे थे कि पहले ही निकल जाओ. But advices बहुत ironical हो गई इसके लिए और मेरे लिए. हाँ तो subjective है ना. See, the simple thing is, if you like someone, let them go, but tell them. I never asked you not to tell them.
You tell them and then let it be. If they come, वो they're तो open yours. mic में जा के perform कर रही है. हाँ. Tell तो. If you see, I guess Kopal would know. Anytime I've written a story which is a true story, I have made sure the first message is to the person जिसके लिए मैंने लिखी, even though I'm not talking to that person. I let that person know that I am putting this out. This is my part of story. I'm not telling you to. You need to share your part, and I'll make sure you are not fabricated in any way in my part of the story. You would have seen all of my stories. There's no one fabricated in them. So the most beautiful part of letting go the love is to tell the love that I love you, and then you can fly your way. If you come back, it will be mine. If you don't, it's fine. I'll find someone else. It's one simple life. The most beautiful and the least thing that you can do is to fall in love and be loved. Let's recreate the SRK pose. Who wants to volunteer to learn it, and we'll give somebody else this thing. You wanna come? Come. आप नहीं कर रहे हैं? मैं of course. ऐसे खड़ा होना है. राइट की तरफ 45 डिग्रीज पे टिल्ट होना है. राइट लेग बेंड नहीं होगा, सिर्फ लेफ्ट लेग बेंड होगा ऐसे. एंड देन जस्ट ओपन योर आर्म्स. फील द ब्रीज. बिलीव यू आर शाहरुख. Go to all the amazing places you have seen in this world. Do a Shahrukh pose there because you will feel like the king of this world. Woo! Thank you so Thank much. you. Thank you.